class, as I had said to you that I'll tell you the symbolic meaning of the poem, The Road Not Taken. So I'm here. So today I'll tell you the symbolic meaning of the poem. As the poem says, two roads diverge. You can see in your book also, two roads diverge in the yellow wood. What the two roads symbolize? Two roads are the different choices that we have in our life. And the yellow wood means the world itself. जिस संसार में हम रहते हैं, that is said The Yellow Wood by Robert Frost. And in this world, our life, the story, the poem is our life itself. The traveling is our life itself, and in our life a point comes when we have to make choices. And we have different options in our life and we have to choose one, because we have to go ahead on the one option only. We have to opt only one option in our life, and that decides our future. We have to, as the traveler, being a traveler, Robert Frost says that I looked upon the two roads. I examined the two roads, and in the same way in our life, when we have different choices, we have to choose one, and then we have to examine what are the pros and cons of that choice, whether it will make us reach the better destination or not. What will be our future? Nobody knows the future, but we have to take the decisions at the right moment. And the two roads are symbolizing here the two choices in life. And as the poet chooses one road, and the second road he leaves for another day, है ना. जैसे पोएट है वो दूसरे दिन के लिए जो रोड उसने छोड़ दी, द रोड नॉट टेकन, दैट इज वाई द पोएट हैज गिवन दिस टाइटल टू द पोएम कि द रोड नॉट टेकन. जो चॉइसेस हम अपनी लाइफ में छोड़ देते हैं, जिनको हम नहीं ऑप्ट करते, एंड वी कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दैट इन द फ्यूचर. जैसा कि पोएट ने एंड में पोएम के लास्ट स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि अगर मैं जिस भी डेस्टिनेशन पर पहुंचूंगा, एटलीस्ट आई विल टेल द फ्यूचर जनरेशन कि जो कुछ भी मैं आज हूँ या जिस भी डेस्टिनेशन पर मैं पहुंचा हूँ, दैट इज द रिजल्ट ऑफ माई दैट डिसीजन. उसी तरीके से हम जब लाइफ में कुछ भी, हमें जो भी गोल होता है, वॉट एवर डेस्टिनेशन वी रीच, तो हम उस अपनी चॉइस को ज़रूर याद करते हैं दैट वी हैव लेफ्ट, जो हमने नहीं चुनी. तो द पोएम इज अबाउट दैट लेफ्ट आउट चॉइस इन अवर लाइफ, जो हम ऑप्ट नहीं करते, जो हम छोड़ देते हैं. एंड दिस इज अ मैसेज ऑल्सो. दिस पोएम इज अ मैसेज ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट that in our life we should take each and every decision very wisely. We should be very wise while taking the decisions, the important decisions of our life, because our future depends on our that decision. जो भी हम डिसीजन ले लेते हैं अपनी लाइफ में, हमारी पूरी लाइफ, हमारा फ्यूचर जो है वो उस डिसीजन पर ही बेस्ड होता है. तो अगर हम विजडम से डिसीजन ले लेते हैं तो वी कैन रीच बेटर डेस्टिनेशन. इट इज़ नॉट इन अवर हैंड टू मेक द फ्यूचर. हमारे हाथ में फ्यूचर नहीं होता, वी कैन नॉट मेक इट, बट वी कैन टेक द डिसीजंस वाइजली. तो हमें पूरे प्रोज एंड कॉन्स उसके देख के, जो भी हम चॉइस ऑप्ट करते हैं लाइफ में, उसके बाद हमें डिसीजन लेना चाहिए. एंड वी शुड वर्क एट इट. अपनी चॉइस जो भी हमने चुनी है, वी शुड गिव अवर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट हाफ एट गॉड इटसेल्फ, बिकॉज फ्यूचर इज इन हिज हैंड ओनली. लेकिन डिसीजन लेना हमारे हाथ में है, एंड दैट वी शुड टेक वेरी वाइजली. दिस इज द मैसेज. Now come to the poetic devices. I think the meaning of the poem would be very clear to you, and if you have any query, you can ask in the comment box. You can make a query there. Now I'll clarify the poetic devices. First of all, the rhyming scheme. The rhyming scheme of the poem is, as you can see,
the first lines of the poem, the first stanza, it says two roads diverge in a yellow wood. What is the rhyming scheme? अब इसमें देखिए rhyming scheme क्या होती है. The last word of each line, we see the last word of each line, and जैसे भी वो rhyme करता है जिस भी line से, according to that we decide the rhyming scheme. We search out the rhyming scheme. So wood rhymes with the third line stood, and the second line both rhymes with the last fifth line undergrowth. So the first, second and fourth line of the poem rhyme together. So the rhyming scheme is A, B, A, A, B. The rhyming scheme of the poem is A, B, A, A, B. This is the rhyming scheme of the poem. Now come to the literary devices. First of all, there is symbolism, because the whole poem symbolizes our life. और इसमें symbolism किन किन जगह पर हमें दिखता है? Two roads. Two roads symbolize here the choices in our life. When we have options, we have choices in our life that are symbolized with the two roads. The wood symbolizes with this world. ये संसार जो है, that is the yellow wood. Now there is alliteration. What is alliteration? Alliteration is when the two consonants are repeated. So first for another day. The line is I left the first for another day. So first for. So F sound is repeating here. And the second alliteration comes when the poet says wanted wear. है ना? The line is before, because it was grassy and wanted wear. So wanted wear में W, V sound is repeating. That is why it is alliteration here. Again, it is personification. When what is personification? When the non-living thing is presented as having life in it. So because it was grassy and wanted wear, what is it here? It is the road. रोड को इट कहा गया है यहाँ पर. इट इज द रोड हियर, एंड रोड को कहा गया इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वियर. ये ग्रासी थी एंड वांटेड वियर. तो इसको एक ह्यूमन बीइंग की तरह रिप्रेजेंट किया गया है कि यह चाहती थी कि इस पर कोई चले. इट वांटेड टू बी वोर्न आउट. उसके बाद है रिपीटेशन. रिपीटेशन इन द लास्ट स्टैंजा इट इज एजेस एंड एजेस हेंस. एजेस वर्ड इज रिपीटेड टू शो द फ्यूचर. And two roads diverge in the yellow wood. This is the line that is repeated. It is in the first stanza. This line is given in the first stanza. You can see two roads diverge. So this line is repeated here. First is showing the present, and the last when it is used in the last stanza, it shows the past. कि जब वो future में पहुंच जाएंगे, then he will tell that two roads इस तरह हुआ कि two roads diverged in the yellow wood. So it is with this poem, and it is the end of the explanation. Thank you.